Hope all of you are fine and healthy at home. Before going to start my lecture, I would like to share our beloved Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sayings, which is a Muslim who plants a tree or sows a field from which man, birds, and animals can eat is committing an act of charity. This is our lecture number 5 and it will cover the unit number 2 and 3, and the topic is rational number. This topic is much lengthy, so I have decided to divide into 2 parts. So today I am delivering the first part and there is a second part of rational number. First we will know what is the rational number. Rational number is a set of all numbers which can be expressed in the form of a over b, maybe p over q, where a and b are integers. B is not equal to 0. Example, -7/2, 4/5, 1/3 and -1/8. रैशनल नंबर जो होते हैं बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म्स में होते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ रूल कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होता. Now there is a table which I have designed to understand you more about the rational numbers. Like a rational number is a number that can be in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So there is a table which explain you more that q should not be 0. Like in the first column, there are 4 columns over here. First column denote for p and q, second column denote for q, and the next is the fraction, and then the last one has the answer. Okay, now in the first one, 1/1 is answer will be 1, and the 1/2 the answer when we want to write in the fraction it will be 0.5. Now I am moving to the last row, which is 7 is p and the q is 0. It's mean the denominator is 0 here. So it's mean that it's not a rational number. ये rational number नहीं है, क्यों rational number का तो रूल है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. Now types of the rational number. Rational number is positive if its numerator and denominator are both either positive integers or negative integers. ये positive integers भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं, like 2/5 and -8/-5. And then if the and move to the negative rational number. If either the numerator or the denominator of a rational number is a negative integer, then the rational number is called a negative rational number. अगर डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में से कोई भी डिजिट के साथ नेगेटिव साइन हो तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर. स्टैंडर्ड फॉर्म, our rational number is said to be in its standard form when the numerators and denominator have no common factor. मीन्स के जब डिनोमिनेटर या फिर न्यूमिनेटर में से कोई भी जो है उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो और सिवाय किसके, 1 के, तो वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ टू एक्सप्लेन यू with the number line, there is a number line. To express rational numbers appropriately on the number line, divide each unit length into as many numbers of equal parts as the denominator of the rational number. Like you have seen a line, and the right side there are positive integers and the left side there is negative integer. So at the center there is a 0, and after that 1, 2, 3 at the right side, and negative side there are -1, -2, -3. And you also have seen there are some fraction or rational number in the form of p over q, minus also in minus form and also in positive form. So if we want to show it half 1/2 on the rational number, so we know it very well that the 1/2 0, it belongs to 0 and 0 between 1. ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, 0 और 1 के सेंटर में. और हमें पता है कि 1/4 का मतलब होता है 1 का 1/4 पार्ट. सो हम 1 से और 0 तक उसके 4 पार्ट्स बना लेंगे और 4th पार्ट पे हम उसको शो करेंगे. इसी तरह 3/2 को भी 1 से और 2 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो आपका 2 है, इट्स मीन ये 1 और 2 के सेंटर में जो है बिलोंग्स करेगा, और इसका न्यूमिनेटर 3 है, तो इट्स मीन डिनोमिनेटर आपका स्मॉल है और न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये कहाँ बिलोंग्स करेगा, 1 और 2 के सेंटर में.
Same the criteria with the negative signs. Integers, your rational number -3 over 2, so it belongs to -2 or and between -2 and -1. Now there is an example which you can explain more, like if you want to draw a line of -2 over 3, so you will draw a line between 0 to -1 because denominator is bigger than the numerator. Next is operations with rational numbers. First is additive inverse. Additive inverse of a rational number is the same number having opposite sign. एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि हम एक डिजिट का लाइक 3 इज़ एडिटिव इन्वर्स इज़ -3, हम सेम डिजिट का जो है उसका चेंज करके जो है ना उसका ले लेते हैं उसका डिजिट, लाइक 3 का -3, और अगर फ्रैक्शन में हो तो हम जस्ट साइन चेंज करते हैं, माइंड में रखिएगा, उसकी फ्रैक्शन नहीं चेंज करते, उसकी वैल्यू नहीं चेंज करते। 3 जैसे -3 over 5 का क्या होगा, +3 over 5। Operation of rational number, we know it very well that if the denominator is not same, we will take the LCM. We have done these things in our previous classes. Like look at the first example. There is a simple example, 2 over 3 plus 1 over 4. So this is an unlike fraction, so we will take the LCM of 3 or 4. This is which is 12, and then we will solve it and move to the second one, -3 over 5 plus 7 over 10. So we will take the LCM, but there is a sign of minus with 3, so when we solve it at the end, we just subtract them. Why? Because minus plus is minus. Addition of rational number. When we want to addition of rational number which is -11 plus -7, इस फॉर्म में आपको दिया हो, सेंटर में प्लस हो, और दोनों जो आपके डिजिट्स हैं या तो वो फ्रैक्शन में हो, मे बी फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, मींस रैशनल नंबर में, और इस तरह डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो जो प्लस होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है, इट्स मीन प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं, इसलिए आंसर क्या आएगा, -18। सब्ट्रैक्शन में सेम क्राइटेरिया जो हमने एडिशन में पढ़ा है कि अगर हमारी जो डिनोमिनेटर वो सेम ना हो तो हम एलसीएम लेंगे, और फिर सेम क्राइटेरिया बट उसके सेंटर में नेगेटिव साइन होगा तो हम दोनों उसको माइनस करके उनका आंसर राइट कर लेंगे। देयर इज़ द एग्जांपल ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स लाइक p over q minus q over s, and the answer will be q minus p over s. There are some questions of addition and subtraction. First question is -5 over 6 and -7 over 9. There is unlike fraction, so we will take the LCM first. The LCM will be 18. So we will make them 18 denominator. So we will multiply with 6 with 3 and 9 with 2, and same the criteria with the numerator. उनको भी हम 3, अगर 6 के न्यूमिनेटर 5 को हमने नीचे 3 से किया, ऊपर भी 3 से, और 9 को 2 से किया है, तो उधर 7 को भी 2 से, और फिर एंड पे जब इनको हमने सॉल्व करना है, माइनस माइनस इज प्लस, वो होंगे प्लस, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव, विच वी हैव लर्न। ओके, देयर इज नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ इन मिक्स फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, -4 over 2 plus 2 over 6 over 11. So there is a negative sign with the one integer and with the second integer, but at the center there is a positive sign. The plus will multiply with the negative, and we will add, but at the end when we will take out the answer, so answer will be in negative sign. Multiplication of rational number, it's very easy. You will you have learned it in before your classes, in your 4th or maybe 5th class or 6th class. Like you multiply the numerator with the numerator and denominator with the denominator. Like there is an example, 2 over 5 multiplied by 6 over 7. आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपके क्या है 5, 7 से को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आंसर आएगा 12। ओके, सेम द क्राइटेरिया विद द 1 over 4 मल्टीप्लाई बाय 2 over 3, सो आंसर विल बी 2 over 12। और अगर आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो आंसर आएगा 1 over 6। देयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन, लाइक देयर इज़ अ डॉट, इट्स ऑल्सो डोनेट फॉर मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई को जाहिर करता है। 2 over 5 मल्टीप्लाई 9 over 2 18 over 10, और ये दोनों सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, विच इज़
9 over 5. It's a next example you can more understand by yourself. Okay, multiplicative inverse. This is the same, like in multiplicative inverse we will change the rational number, like reciprocal the rational number. If they are in p over q form, we will change them over p. Like example is multiplicative inverse is of 2 is 1 over 2, and multiplicative inverse of minus 11 over 9 is, what is the reciprocal of minus 11 over 9 is minus 9 over 11. You just change the fraction, not change the signs. Okay, deviant rational number, we know it very well that when there is a form of a over b divided by c over d, is equal to, we will reciprocal of c over d. first mention the multiply sign at the center and that's reciprocal. हम क्या करते हैं, सेंटर में पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और फिर c over d को रेसिप्रोकल कर देते हैं d over c में. This is example which explain you more. 2 over 5 divided by 1 over 4, we will reciprocal the 4 over 1 and with the sign of multiply at the center. Okay, and the answer will be minus 8 over 5. There are more example which you can explain more and which you understand more, like 7 over 2 multiplied by minus 5 over 4, that you will multiply with them, and numerator with numerator and denominator with denominator. Allah Hafiz students, hope you have understand all the concepts which I have discussed today. Please keep practicing of your work and stay at home.